Point of order. He has point of order. Rule 258. What is your point of order? Sir, Rule 258. सर, सदन की कार्यवाही चलने के दौरान कोई भी सदस्य अगर व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो सदन के नियम 258 के अंतर्गत उस विषय को उठा सकते हैं। सर, राज्यसभा एट वर्क जो है, हमारे सदन को चलाने के और यहाँ विषयों को रखने के जो नीतिगत नियम हैं, जो हमारे सदन में कोई भी विषय सदस्य के रूप में रखने के एथिक्स हैं, उसके संबंध में इसके पेज नंबर 282 में, क्योंकि सदन में बोलने के लिए परंपरा का प्रयोग किया जाता है और इसमें ये लिखा है, मैं पढ़ता हूं सर, पेज 282. In their dealing, if member find that there is a conflict between his personal interest, Sir, in their dealing, if member find that there is a conflict between their personal interest and public trust, which they hold, they should resolve such a conflict in a manner that their private interests are subordinated to the duty of their public office. मैं सर मैं यहाँ एक विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये कोई भी हो सकता है। मेरा कहने का किसी को रोकना और किसी के, मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ जो भविष्य में भी सदन के लिए बने। अगर मैं किसी मैटर में एक प्राइवेट लॉयर के रूप में आर्ग्यू करता हूँ, is it not my duty to disclose before the house that argued in matter in court in a personal capacity also? Because the client engaged me. Sir, this is no law, established law. A lawyer goes and represents a case, the facts of a case before the judge, who doesn't belong to any political party. Sir, so that Mr. Sibal has some kind of a personal interest, but he should first declare is something which is not tenable. I know what you are trying to do. I am not questioning. Sir, I am not questioning anything. I am also a lawyer, sir. I am not questioning anything. It's a propriety demands. I first disclose that I argue that matter in the court in a personal capacity also. Because the fair argument must be here. I am not against, sir. Even today it happened with me, it happened to any other member also. This is the highest house of this country. Please, please. See, let him speak. Please, sir, allow him to speak. Sir, allow me to speak. Shukla, no, let him conclude. Sir, let him conclude. Sir, protect me from Mr. Rajiv Shukla also. He allow me to speak, sir. Please sit down. Please. I will give you time. I will give you time, Shukla. That is वो तो उनके अधिकार में, वो किसको इजाजत दे, उन्होंने मुझे इजाजत दी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं इसमें किसी का कोई पर्सनल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इसको बहुत मैं सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। लेकिन एक भविष्य की व्यवस्था का प्रश्न हम इस सदन में उपस्थित करें कि हम जो भी मैटर इस हाउस में करते हैं, सपोज मैं कोई व्यवसाय भी चलाता हूं, उसके संबंध में कोई पॉलिसी का आर्गुमेंट आता है, मैं चाहे उससे नहीं कमाता हूं, मैं उसको चैरिटी ट्रस्ट में देता हूं, लेकिन उसको आर्ग्यू करने के पहले क्या सदन की जो कन्वेंशंस हैं, उस कन्वेंशंस में आपकी ये रूलिंग आए। मैं यहां किसी को इंटरप्ट या रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन सदन में एक नियमों की व्यवस्था, एक जो कन्वेंशन हम देना चाहते हैं, उस पे आप अपनी रूलिंग दे, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। This, if we set up this precedent, this will go against the ruling party. My very distinguished friend, colleague, and the leader of the House is a very distinguished lawyer, and over a few decades there must be hardly one case, any single case where he must have not appeared. Now, as leader of the House and finance minister, he is talking about the policy, then tomorrow we'll say, you are a lawyer for this, and now you cannot make a policy and speak. I don't think, please do not go into this. Then this will start, it will apply to you also tomorrow. विपक्ष के नेता ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है।
मैं जनरल पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरल पॉलिसी में किसी भी मुद्दे के संबंध में हम आर्ग्यू कर सकते हैं। Here I am asking about a particular case which is a subject matter of discussion of this house. I am not talking about general policy. No, no. ये मेरा व्यवस्था का प्रश्न ऐसा है सर, ये मेरा व्यवस्था का प्रश्न ऐसा, मेरे व्यवस्था का प्रश्न ऐसा है कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर नहीं मेरा व्यवस्था का What is प्रश्न your ऐसा- specific point? मेरा व्यवस्था का प्रश्न पॉलिसी के संबंध में नहीं है। मेरा व्यवस्था का संबंध अगर कोई पर्टिकुलर केस है और उस पर्टिकुलर केस पे अगर इस सदन में कोई विवाद विषय चलता है, उस पे विचार रखने से पहले क्या मुझे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। It's a public knowledge. What is this? It's public knowledge that he had appeared in that case. Even Venkaya ji had pointed out in his speech. So, I mean, you know, I am not public and policy It's only issue. applicable. I am talking about when a there is a particular personal case. interest is involved. Here, Personal interest is involved. Here, There is no here you personal are interest involved. here in you are a narrating. You have also appeared in Here- lot many cases about Gujarat. Sir, Then you are arguing here Gujarat. I asked to issues. chair. Why? Here you are Lot- narrating a facts of a particular case, not a policy. Bhupender ji, I know that you have appeared in several What is the cases problem? Not role about of Gujarat. governor. I am not Gujarat talking government. about role of. But I am whenever not- any issue is raised about Gujarat, I am talking you with- always What is the have to problem? I doubt. didn't सर मैं चेयरमैन साहब से कहना चाह रहा हूँ सर, मैं एक I did व्यवस्था- not You can understand. always May I participate in repeat that. again, It's sir? a public domain that he had appeared for. I the thought you were speaking, that's No, why no, I came. may I again repeat my point of order, You are sir? speaking now. Then why? Chairman, sir. Because I was a lawyer in the matter, I have not disclosed that fact, and Venkaya ji himself said that Mr. Sibal will in fact throw light on this matter, because everybody knows that I am the one who appeared in that matter. It's public knowledge. Even he knows that. So, What is all unnecessary. I am not withdrawing. I want a ruling, sir. now, see, Yes, sir. 1 second. Kamilji, 1 second. You see, I don't know what is the problem. I was under the impression, in the TV I saw you were speaking, so I thought you were speaking and I came only. Now you did not complete your speech. So, sir, So what is the issue you are saying? Let me. sir, may I again? Please. Sir, What is the issue? Is there a point of order? yes, sir. Point. What is the point of order? Sir, point of order under Rule 258. That is okay. That is okay. Ah, Sir, my point of order about the conventions. ah, Convention is that ah, in Rajya Sabha at work, ah. page sir 282. No. Okay, Sir, you say only rule. Sir, That's your workers, they are all opinions. sir, opinion. Sir, about I only go by the rules. सर इस ओपिनियन के ऊपर कन्वेंशन है। बोलिए. कन्वेंशन ये है सर, What is the point of? यस सर, कन्वेंशन ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर Ah, इस सभा के सामने विचार के लिए उपस्थित है, उस पर्टिकुलर मैटर के फैक्ट्स पे अगर हम किसी भी न्यायालय में आर्ग्यू करते हैं वकील की हैसियत से, तो क्या उन्हीं फैक्ट्स को बिना ये डिस्क्लोज किए कि मैंने न्यायालय में भी इन फैक्ट्स को आर्ग्यू किया है, चाहे वह पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, क्या हम इस सदन के अंदर आर्ग्यू कर सकते हैं? you see. Okay, I'll deal with that. बिना See, डिस्क्लोज that is only. बिना डिस्क्लोज दूसरा विषय कि हम किसी विषय के पॉलिसी पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, बहुत सारे पॉलिसी पे आर्ग्यू कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर केस. इन ए पर्टिकुलर केस, इफ आई एंगेज एज ए लॉयर इन माय पर्सनल पोजीशन, कैन आई यूज? I'll tell you. क्या मैं I got your point. Yes, I got your point. my last sentence. क्या मैं जो पर्सनल कैपेसिटी में आर्ग्यू करता हूं उसको पब्लिक के लिए भी बिना डिस्क्लोज करे आर्ग्यू कर सकता है और करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी का मैटर है, आप इस पे रूलिंग Okay, all right. No, sit down. No, that's all. I will deal with that. No need. I will deal with that. Oh, then let me give the ruling for that. Then I will give you. You are not on that subject, I believe. Same subject. I am not taking this side or this side. I'm on a rule. Rule 294. Okay. Just give us a ruling on Rule 294 because he's talking about 248. I'm not finding that in 248. Okay, bolo. 258.
You look at 294, sir. 294. And Okay. this is not to make a charge against here. No, since no, we are- this is what I was going to I say. was listening to the debate. No, I see, this is what I was going to say. Yeah, I know so it. Look at 294. I know it. Because you are bringing up No, see, 258. no. 258 to what the... No, that has nothing to do with this. Yeah, so Sit look there. at 294. I Was got he it. impinging on 294? I got it. See, the only point is, see, what he's saying that, see, honorable members, Sri Kapil Sibal have certain information, yeah, I know, certain information about a particular case, about a particular case, which he is arguing in the court, and because of that he has information. That means he has an interest. That is the issue. Question of interest. That is what you want to raise. Question of interest, isn't it? Now, let me say, yes, declaration of interest. Yeah, question of interest. Yeah. What is it? That means he has a private interest. That's what I am saying. Information can be from anywhere. Anywhere. There is no bar for a parliamentarian to take information from anywhere. Anywhere. I was a teacher. I have a lot of information which I got from my profession, which I will use here. So information can be from anywhere. But the important thing is, if I have a private interest in any matter being discussed here, then I am supposed to declare my interest. After that only speak. So if you are arguing on a case, particular case, connected with this discussion, you only say that you are arguing that interest to be declared and then proceed. That's all. That's all. That is all. Now let him explain. Let him explain. Are you arguing now it? I'm sorry? Are No, you- that's no. why I said what private interest can I have in Then a case it's which has over. been decided No by the private Supreme interest, sit Court? down. No, sit down. No, my rule. What private interest? No, sit down. I have given the, I know it. What is, see, if at present, when this discussion is going on, if you are engaged as an advocate in the case which is related to this discussion, you have an interest. If you argued a case similar 2 years or 3 years back, that is over. That's There's right. no interest here. There's no interest. Thank no you. question of interest. Thank you. Are you? You've given the ruling. Thank you. That's all. No, any case, yeah. सर आप रिकॉर्ड पे जाइए हाँ. एग्जैक्ट उसी केस के बारे में Pardon? ऑनरेबल मेंबर ने डिस्कशन में उसको कोट किया है जिसके बारे में कि इंटरेस्ट की बात की जा रही है हाँ. आप रिकॉर्ड में जाइए रिकॉर्ड में जाने के बाद जो ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया है उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप देखें और उस पर रूलिंग दें Yes. Heard him 2 times. He has explained 3 times. You understand? Again, first response of the chairman was, there are only opinions in a book. The call, this is not a rule. He said, I'll go by rule. The opinions I don't go. Then, Keshav, when he this issue now, is please, not related to Nakviji, you. baithiye. Why you Nakviji, are- when I am on my legs, This please, issue is I'm not not related yielding. to you. This is only... This point of order is not about you No, No, point of order You are goes on. explaining. If you know the rules, there is another point of order. If you don't know what is point of order. Point of order relates to the house being set in order. So everyone is interested in that. Sir was very correct when the first said, if he was referring to the book, he said his opinion. Usually whenever there is one rule, lot of opinions have come in. That first judgment is given. Second is, what we said before you came, sir, he was a lawyer some time back, say 1 year back. Not now, and not won now. the case. The case was over. Where is the Over. question of personal interest in that? No, verdict is over. But it is also over. Then there and is his no- implemented then also it's over. okay. And is no more holding the No, private. then it's okay. Then it's okay. No. If you extend, see, no, if you extend that argument, I'll tell you, no. 294 No, I want to read, sir. 294, I know. I have read 294 it. one, sir. I told if he has private interest, any interest, he should declare it. I told him. He first declared. But I am saying, no. Private interest means, I'll tell you for example. I will explain to you. I was a professor Yes, sir. in a college. I have got so many information from there. That is the information I got from my profession. Can I not use it here? Now, let me complete. Likewise, his profession, he was engaged in a particular case. That case is over. Case is not over. No.
If not over, you can dispute. I will come. What I have been told is, case is over, verdict is over. No, Case is not over. Case is pending before the court. And honorable member is the actually they are disputing. advocate in this case. Sir, I want to. Case is already pending in the court. Sir, I want to, sir, No. a point of order. Sir, Sharma ji, just a minute. No. Sir, because. No, factually you are questioning him. Because you are giving a very good example. I am a professor of college. मैंने किसी क्वेश्चन पेपर का मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया और वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गए now the subject matter of leakage of that paper is subject matter of a discussion of a house. Can I, No, court without is- informing to the house that No. I am a person who settled this paper, can I argue the Bhupendra paper? Yadav ji, no, Bhupendra Yadav ji, that example will not work here. Sir, that is court your is example. open court. Sir, that is your Court example. may whatever he says is open. Sir, that is your open to example. anybody. It is open court. Sir, if I settled any question paper, Okay. Now I will. Sir, what he is referring to and what the Minister of State for Parliamentary Affairs, Naqvi ji, has just said, that is not a correct statement. In the morning, sir, I quoted from the judgment of the Constitution Bench of the Supreme Court of 13th of July. So that matter is over. So please, we are not and stopping you. Don't you. get up. You are a Because, person. You are. sir, you listen. you will not Minister, appear as a you are lawyer. personally You involved. can. But if you are can appear as involve a in lawyer, after taking a brief, after taking a plea, Anyhow. that is your pecuniary interest. Okay. That is Bhupendra your Yadav, no interest. discussion further. Bhupendra Yadav, sit down. All of you sit down. I am giving the ruling. Now listen, I am giving the ruling. Now this matter is only very simple. Rule 294, as referred to by Sri. Whenever a member has a personal or a specific pecuniary interest, direct or indirect, in a matter being considered by the council or a committee thereof, he shall declare the nature of such interest, notwithstanding any registration of his interest in the register, and shall not participate in any debate taking place in the council or its committee before making such a declaration. If you have a private interest, declare it, that's all, and then you continue. That is up to him now. Eh? Kindly see the explanation to the rule. Explanation. For the purpose of this rule, the interest of the member should be direct, personal or pecuniary, and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common. That is regarding vote. In general, that is regarding vote. So, personal or direct. So, if you have, no, it is only for Kapil Sibal to declare if he has any personal interest. You say, if you have no interest, you say that and speak. The case has been argued, the judgment has been delivered, and I have no personal interest. No personal, then you can proceed. Okay, fine. That's the ruling. You can proceed. Okay. I wonder, Malaj, what, I wonder How much what... time? Okay, please. ये जो time... 4 minutes waste हुआ है 5 minutes Now, please. 5 minutes waste More than that, Yeah. than that. 10 minutes have been wasted on this. Yeah, okay. Deputy Chairman, sir, the point that I was making was that on the 9th of December, the governor decided to prepone the assembly to the 16th of December. So he preponed it. Then what the BJP along with others did was to have a session outside the assembly. And on the 15th of December, the deputy speaker chaired that session. On the 15th of December, they were disqualified, so the deputy speaker was disqualified. On the 16th of December, he chaired that session and declared his disqualification to be bad. His own disqualification. He declared his own disqualification to be bad, and on 16th of December, he declared that the speaker was no longer the speaker of the House. This is what's happening. And this is what happened in Arunachal Pradesh. Venkaiah ji probably didn't know the facts. On the 16th of December, they did that. On 17th of December, again outside in a hotel, they moved a no-confidence motion and said that somebody else is the chief minister. No, this is unheard of in the history of India. Yes, 356 has been used, misused, but this kind of machination has never happened in the history of India.
And in the history of India, this is for the first time that the Supreme Court, after several months and after another gentleman was the chief minister, restored the status quo ante, which has also never happened in the history of India. This is the extent of castigation of the machinations of the BJP. They not only want a Congress Mukt Bharat, they want a Northeast Mukt Bharat. That's one of the general secretaries said that, and I don't want to take his name because he's not a member of this house. That's what he said, he wants a Northeast Mukt Bharat. So what did the Supreme Court do? Supreme Court said, what business did they have the governor to prepone the assembly? He has no constitutional right. He is a hyphen between the executive and the legislature, nothing more. But you are treating your governors as RSS pracharaks, as agents. You are treating them as RSS pracharaks, and you are using the post of the governor to destabilize elected governments in this country. And I warn you, if you are 282 today, you will be 28 tomorrow. That's what's going to happen to you. Don't do this. And see what the Supreme Court has said. I want to just read a couple of lines from the Supreme Court judgment so that you are enlightened about the extent to which the Supreme Court has gone in castigating the function, the attitude of the governor. And I am referring to paragraph 191. With your permission, sir, I will read it. We are of the view that it needs to be asserted as a constitutional determination that it is not within the realm of the governor to embroil himself in any political thicket. The governor must remain aloof from any disagreement, discord, disharmony, discontent, or dissension within individual political parties. The activities within a political party confirming turbulence or unrest within its ranks are beyond the concern of the governor. तो जो वेंकैया जी कह रहे थे कि आपकी पार्टी में ये हुआ, आपकी पार्टी में वो हुआ, it's nothing to do with the governor. Governor has no role to play. Governor can't entertain members of the BJP and decide to tell the speaker or tell the chief minister to put the resolution for removal of the governor in the house. What role does the governor have? Governor is not interested in the proceedings of the house. Can the President of India ask this house or the Lok Sabha as to what are the proceedings and what are the items of agenda that are being debated in the house? Further, the governor must keep clear of any political horse trading. You wanted to know which paragraph of the Supreme Court judgment is disused. The governor must keep clear of any political horse trading and even unsavory political manipulations, irrespective of the degree of their ethical repulsiveness. Who should or should not be a leader of a political party is a political question to be dealt with and resolved privately by the political party itself. It is the Congress party's concern, not the BJP's concern. Why are you concerned as to what was happening in our party? You get concerned about what's happening in yours. And what's happening in yours in Gujarat is very disturbing. And what's happening in Uttar Pradesh is also equally disturbing. And what's happening in Muzaffarnagar and what you are doing there is also equally disturbing. But we don't comment on it. The people know what's happening. Further, the governor cannot make such issues a matter of his concern. The provisions of the Constitution do not enjoin upon the governor the authority to resolve disputes within a political party or between rival political parties. The action of the governor in bringing the aforesaid factual position to the notice of the President in his monthly communications may well have been justified by drawing the President's attention to the political scenario of the state, but it is clearly beyond the scope of the governor's authority. This is what the Supreme Court has said about the actions in your governor, and your Prime Minister has chosen not to come to this house and explain to the people of this country. Okay. It is shameful. Not only did the governor do this, he also sent messages to the house. He set the agenda for the house. He said on such and such day, on 16th of December, when you will meet, this is how we will discuss. The first item on the agenda will be the removal of the speaker. Is this the function of the governor? The people of this country do not even know. And your Prime Minister chooses to remain aloof?
प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कौन से एजेंडे पे वो काम कर रहे थे, कौन सा आरएसएस का एजेंडा था, कौन उनके मन की मंशा क्या थी। मन की बात तो करते हैं, मन की मंशा तो बताएं। क्यों उन्होंने ऐसा अरुणाचल में किया? चलिए, अरुणाचल की बात खत्म हुई, मैं उत्तराखंड में आता हूं। Time. 5 minutes was wasted. नो 5 minutes was wasted. Now please conclude. मैं उत्तराखंड की बात करता हूं। Please conclude. आई विल जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। Please मैं conclude. उत्तराखंड की बात करता हूं। उत्तराखंड में क्या हुआ? You withdraw your name. उत्तराखंड में 18 फरवरी को, 18 फरवरी, वहां भी मैं ही वकील था भैया, बता दूं आपको, वो भी जजमेंट आ चुकी है, लेकिन वहां मैं वकील था। 18 फरवरी में क्या हुआ? 18 फरवरी को लेटर ऑफ ऑपोजिशन, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिखी गई। उसमें 9 बागी जो कांग्रेस के एमएलए थे उनके भी दस्तखत थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी का था। और सबसे विचित्र बात यह है, वो जब चिट्ठी लिखी जाती है शाम को, उस चिट्ठी का पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, चिट्ठी मेरे पास है। उसमें लिखा है, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन met you today on 18th of March morning and requested you to forward the message to Speaker of the Legislative Assembly to seek a division of votes on the proposed income and expenditure appropriation bill for financial year 2016-17 as introduced in the Assembly, as the government is in minority and is being run in an unconstitutional manner. मतलब कि सुबह ही बता दिया था कि गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी, अभी तो सेशन हुआ भी नहीं था, और 9 कांग्रेस बागियों के दस्तखत इस चिट्ठी पे। सो व्हाट हैपेंस? वेरी शॉकिंग। व्हाट हैपेंस इज दैट द सेशन टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर द सेशन टेक्स प्लेस, अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस पार्टी देयर, द अप्रोप्रिएशन बिल वाज पास्ड. According to the government of India, it was not passed. In any case, the governor told Harish Rawat to prove his majority on the floor of the House on the 21st of January, prove it on 28th. Prove it on 28th. He was ready to prove it. In the meantime, the Speaker sent notices for disqualification. The same thing that happened in Arunachal. He sent disqualification. Those people approached the court for stay. Stay was not granted. Now they realized they'd be disqualified. That is why on the 27th of January, this government imposed president's rule. Knowing that they would be disqualified, January. February 27th, they imposed president's rule. 28th, he was to prove his majority on the floor of the House. Because the disqualified members didn't get stay, therefore they imposed president's rule. They knew, that this government knew that president's rule cannot succeed here. Because Rajya Sabha, they have no majority. Why did they do this? They didn't want Harish Rawat to prove his majority on the floor of the House, which he would have proved. This is the way they are circumventing electing governments. And then what did they do? Then what is even more surprising, never happened in the history of this country. Our dear finance minister, who is a good friend of mine, he decided, and this government decided, that the appropriation bill was not passed. Just imagine, distinguished members of this House, can a finance minister of the government of India decide that an appropriation bill has not been passed in a particular assembly, in a particular state? Does he have authority to do that? Will finance ministers of this country decide whether financial business was cleared or not in a particular house on a particular day? Is that the function of the finance minister of this country? The finance minister must explain his position. And that's the ground on which they imposed president's rule, that the appropriation bill was not passed. And under the Constitution of India, if a financial business is passed and a money bill is passed in the House, which is true even here, then it has to be approved by the governor. Governor has no choice to disagree with it. He has no choice. But the governor didn't do that. And this proclamation was done before the 31st of March. I can understand. If by the 31st of March the governor had not given his consent, then there would be a constitutional crisis. But they imposed president's rule on 27th of February instead of waiting for the beginning of March. So the point that I am making is, all these facts are in the public domain. And all these facts were known to the Prime Minister. All these facts were known to the Finance Minister, to the Law Minister.
And yet, they Okay, now use these conclude. provisions of the Constitution. Now conclude, No, please. sir, no, sir, just a few minutes. I'll have done. I've done. Just a few minutes. Because these are very important issues. These are very, and what did they do? What did they do? They ultimately went to the governor's house on February 18, and at 1 o'clock at night, 1 बजे रात को उन्होंने स्पाइस जेट की फ्लाइट लेकर सब लोगों को दिल्ली ले आए. उसके बाद राजस्थान ले गए, उसके बाद मुंबई ले गए. They spent a lot of capital, but they got no return on their capital. After all, इतना खर्चा किया, आपको कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए था, वो भी नहीं आपको मिला. सरकार हमारी अरुणाचल में भी चल रही है और उत्तराखंड में भी चल रही है. तो ये पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ. जो आप बातें कर रहे हो ना, ये पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ. मार्च को ऑल दीज डेट्स वर इन मार्च. ये पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ. हाँ, आप बात करते हो इमरजेंसी की, ठीक करते हो, इमरजेंसी की बात करते हो, लेकिन वही जनता 1980 में क्या किया? उस जनता ने वापस कांग्रेस पार्टी को लाया. इतना ही रोष होता तो वापस कभी नहीं हम आते. तो कहने का मतलब ये है कि आज भी आप समझ लो और अपनी नीयत साफ कर लो. Who is justifying? I am said in 1980 the people of India voted the Congress back. Voted the Congress back. Nobody is justifying anything. They talk about the emergency. I am telling them that the people of India still repose faith in the Congress party. And come 2019, the same will happen. The same will happen. So therefore, my request to distinguished members of this House is, when you look ahead, don't look back. Let's walk together. Let's make sure that the right people are appointed as governors of the state. Let's make sure that they are not agents. They are not RSS agents. कोई कहता है कि हिंदुओं को अगर अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश चले जाना चाहिए. कोई कहता है कोई वहां चले जाना चाहिए. कोई मुजफ्फरनगर के बारे में कहता है. कोई कहता है अवार्ड्स क्यों वापस दिए. कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ. ये गवर्नर कह रहे हैं. कोई लव जिहाद की बात करता है. ये आप कर क्या रहे हो? एक संविधान की मर्यादा है, एक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा है. उस मर्यादा से आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हमारे गवर्नर ने कभी ऐसा काम नहीं किया. ठीक है, हाँ, पॉलिटिकल अपॉइंटेड जरूर हुए होंगे, लेकिन आरएसएस के प्रचारक कभी नहीं रहे. आरएसएस के प्रचारकों आप गवर्नर बनाओगे तो उस संस्था का होगा क्या? तो हम चाहेंगे और ये हम मांग करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके यहां स्पष्टीकरण करें कि क्यों ऐसा हुआ और इस देश से माफी मांगे. इस देश से माफी मांगे और उस गवर्नर को बर्खास्त करें. ये हमारी मांग है. बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, thank you. Now, Shri Bhupendra Yadav. Bhupendra Yadav, I thought you were speaking. Okay, now you speak. Sir, if you allow me. Yeah, please, you speak. सम्मानीय उपसभापति महोदय, अभी श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा अरुणाचल के जजमेंट का पैरा 191 पढ़ा जा रहा था. वो जब पैरा 191 पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि वो पैरे को शुरुआत से पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने वहां से बीच से पढ़ना शुरू किया जहां से उनको मुफीद था. लेकिन मैं पैराग्राफ के उस लाइन को पढ़ना चाहता हूं जो छूट गई है. और चूंकि ये सदन इस विषय पे विचार कर रहा है कि भारत में भविष्य में हमारी जो विधायिका है उसका कार्य संचालन किस प्रकार से हो. ये सच है कि गवर्नर की भूमिका पे विचार करने के लिए आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, लेकिन गवर्नर के साथ साथ स्पीकर की भूमिका भी क्या हो और गवर्नर को क्या रोल असाइन करना चाहिए. श्री सिब्बल साहब बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द अगर निकलते हमारे गवर्नर नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत गवर्नर, वो ना हमारे हैं ना आपके हैं, वो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत है. वो एक ऐसा पद है जिस पद पर आने के बाद 2 पद हमारे यहाँ स्पीकर जो है, हमारे यहाँ स्पीकर किसी भी पार्टी के हो, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में अगर एक बार स्पीकर बनते हैं तो आप अबाउ दी पार्टी हैं.
अगर एक बार महामहिम के द्वारा आपको गवर्नर मनोनीत किया जाता है, तो गवर्नर मनोनीत होने के बाद अपने कार्य और आचरण में जो संप्रभुता की शक्ति हमारे राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की चुनकर आती है, उस पर अगर कोई प्रमुख के रूप में कार्य करता है तो गवर्नर करते हैं। लेकिन आज एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसी जजमेंट के पैरा 191 को पढ़ना चाहता हूं और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, द गवर्नर must remain aloof from any disagreement, discord, disharmony, discontent within individual political parties, the activities with a political party confirming turbulence or unrest within its rank or beyond concern or governor. Yes, I read. No. Kapilji, let him speak. But my question is, the parameter of governor powers with reference of Article 163, 174, 175, 179 and 10 schedule have been dealt with by us herein above and need not to be repeated. We are of the view that it needs to be asserted as a constitutional determination that is not within the realm of the governor to embroil himself in any political ticket. गवर्नर का पद राजनीति से ऊपर, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 181 है, जब ये संविधान हमारा बना तो उसमें ये कहा गया, द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब संविधान बना तब हम एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लेकर के आए थे, तब सदन में यह आवश्यकता थी संविधान बनते समय कि अगर स्पीकर के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर वो उस प्रस्ताव को स्पीकर सुनेगा नहीं, वो प्रस्ताव सदन में चर्चा पे आएगा। लेकिन अब तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है। ऐसे में चूंकि राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, ऐसे में अगर राजनीतिक विचारों से अलग होने के कारण कोई अगर राजनीतिक दल में जिसका शासन है, अगर एक सदस्यों की एक निश्चित मात्रा में असहमति होती है, तो क्या हम उनको एंटी डिफेक्शन का डर दिखा करके स्पीकर की शक्ति का उपयोग करके एक तरफा कर देंगे? क्या ऐसे में गवर्नर चुपचाप बैठ जाएंगे? हालांकि आप जो जजमेंट लिखा है इसमें कहा है कि गवर्नर राष्ट्रपति महोदय को अपनी एक मंथली रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन यह विषय एक अपने स्वविवेक अधिकार का विषय है। न्यायालय के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, इसलिए मैं न्यायालय के निर्णय पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उस परिस्थिति पे चर्चा कर रहा हूं जिस परिस्थितियों को निर्मित किया गया। कल इस सदन में, पूरे सदन में एक भी वोट विपक्ष में नहीं था, उसके बावजूद भी हमने हर क्लॉज के ऊपर, चूंकि संवैधानिक संशोधन था, हर क्लॉज के ऊपर मत लेने का कार्य किया। उत्तराखंड के केस में जब डिवीजन मांगा गया और ये रिकॉर्ड पे है, अब इस पर निर्णय हो गया, वो एक विषय अलग है, लेकिन क्या राज्य की जो धन जिसको पारित करने का अधिकार हमने विधानसभा को दिया है, आखिर हम सब जनता के प्रतिनिधि विधानसभा के बीच में आते हैं, और जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम विधानसभा में आते हैं तो राज्य के द्वारा जो उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर अगर हम मोशन देते हैं, उसके ऊपर हम डिवीजन की मांग करते हैं, तो क्या उस मांग को नहीं माना जाना ये लोकतंत्र में लंबा चलेगा क्या? और इसलिए ये मैंने मंत्री जी से जवाब लूंगा। स्पीकर सर, आई वांट टू एड्रेस यू। मेरे को मंत्री जी जवाब देंगे, कोई सदस्य जवाब नहीं दे सकते। नो, मुझे कोई सदस्य जवाब नहीं दे सकते। He is not yielding. Sir, I am not asking. He is not yielding. I am not asking him. I am not asking him. He is not yielding. I am asking only to the Kapilji, minister. he is not yielding, so you cannot. सर He is not yielding. सर मंत्री जी मुझे जवाब देंगे। He is not yielding. सर मंत्री जी मुझे जवाब When देंगे। he is not yielding, you cannot. सर मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये जो विषय है, ये विषय इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम जो सदन में काम करना चाहते हैं उस सदन में हम किस प्रकार से भविष्य में अपने जितने भी विधानसभा की कार्यवाहियां हैं, अपने विधानसभा में जितने भी प्रकार की
हमारी let it complete. I will हमारी लोकतांत्रिक विषयों की जो प्रतिबद्धताएं हैं उन But he has to yield. He is not उन yielding. सारी लोकतांत्रिक No, no. प्रतिबद्धताओं को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं? हमें Even हमें then- भविष्य में It's a point of order. Are you Point of yielding? order, ठीक है। Okay, what's the point of order? Not to discuss What is the point of happened order? in the assembly Pardon? and how a financial business was transacted, because that's not with the domain of this house or the members of this house. Yeah. What was done in the assembly, whether the Yeah, appropriation bill correct. was passed or not, is something that assembly will Yeah, decide. no problem. Cannot be discussed in this house. So I request the distinguished member not to relate to any of those things. He cannot possibly say it was not passed, motion has to be voted. That's for the speaker to decide, not for this distinguished member to comment upon. This is a very serious issue. It's a constitutional issue. Will we now keep discussing whether financial business in the assembly was passed or not, whether an appropriation bill motion was moved or not? Can we discuss that? Can any member even refer to that? It's a proceeding of an autonomous constitutional authority, which is the House. सर नहीं, मैंने नहीं बोला, सर मैंने कोई नहीं बोला। सर हम विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी हो सकती है जो समझ में ना आती हो, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं विधानसभा की कार्यवाही की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा की कार्यवाही की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं देश के विधान मंडलों में क्या भविष्य की बुनियादी चीजें हमारी हो सकती हैं। मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र में जो हमारे विधायक चुनकर के आते हैं और जब कभी भी सदन के अंतर्गत ऐसी स्थिति आएगी कि कोई बजट रखा जाएगा और उस बजट पे कोई कट मोशन लाया जाएगा, उस कट मोशन को क्या बिना किसी मत विभाजन के स्पीकर केवल अपने अधिकार से मत विभाजन का प्रयोग न करने देकर क्या वो पास कर सकता है? क्यों? ये संविधान नहीं है क्या? क्या संविधान के अंतर्गत इन अनुच्छेदों में लिखा नहीं है क्या? भारत के संविधान की चर्चा नहीं हो सकती? भारत के संविधान में मैंने प्रारंभ में ये कहा है कि संविधान में जो अनुच्छेद 181 बना था, उस अनुच्छेद 181 के अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर राज्य के विधानमंडल में स्पीकर के खिलाफ कोई अगर मोशन मूव होता है, रेजोल्यूशन मूव होता है, तो फिर उस स्पीकर को उसको चेयर नहीं करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा, इसके तो हम सौभाग्य मानते हैं। मैं अपने आर्टिकल को सुधारता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसलिए थैंक यू, रियली आई एम ए बॉय बिफोर सिपल साहब। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बड़ा विषय खड़ा हुआ है, इस पे राज्यपाल ने अपने स्वविवेक अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन न्यायालय के निर्णय है। लेकिन उन निर्णयों को आगे भी विचार करते समय भविष्य में हमारे विधानमंडलों की रचना में किस प्रकार से जनता की आवाज को दबाया ना जाए। हम एक कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के शिकार नहीं हो सकते। हमें गवर्नर की भूमिका केवल अलग रह करके नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नर के निर्णय, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र को डील करते हैं, गवर्नर जिस व्यवस्था को डील करते हैं उसमें एक अच्छा शासन स्थापित हो, वे महामहिम के प्रतिनिधि हैं वहां पर। और एक बार अगर कोई व्यक्ति गवर्नर के पद पे आता है तो उसको पॉलिटिकल तरीके से छींटाकशी करना, ये राजनीतिक लोगों को भी बंद करना पड़ेगा। उस पद की गरिमा और महत्व है, और इसलिए गवर्नर के जो निर्णय हुए, उन राजनीतिक परिस्थितियों को जो उन्होंने आकलन किया, मेरा अब भी यह मानना है कि निर्णय आने का विषय अलग है, लेकिन विधानमंडलों में अगर हम बिना इस प्रकार के वॉइस वोट को भी करते हुए, बिना मत विभाजन को करके अगर हम बजट पास करेंगे, तो क्या हम लंबे समय तक उन बुनियादी विषयों को और उन बुनियादी बातों को मजबूत करने का काम कर सकेंगे जिसकी आज आवश्यकता है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम इतिहास की बात नहीं करना चाहते। और हमारी पार्टी ने हमेशा से, हमारी पार्टी लगातार, क्योंकि 1952 में जब हमने इस यात्रा को शुरू करा, इस भारत को बनाने की यात्रा को शुरू करा, आजादी के आंदोलन में जिस सांस्कृतिक भारत को बनाने की ध्वनि, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर के श्री अरविंद तक जिस सपने को देखा था,
उसको आप लोग मार्क्सवादी समाजवाद की ओर ले गए थे। आप लोग मार्क्सवादी समाजवाद से यात्रा करते हुए कभी समाजवाद, कभी बाजारवाद, कभी लाइसेंसवाद, इस तरफ लगातार अपनी विचारधारा को लेकर चलते गए। लेकिन हम ये जानते थे कि भारत को बनाना होगा तो भारत की सांस्कृतिक मूल आत्मा के आधार पर बनाना होगा, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें विश्वास है, जिसमें सम्मान है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें विकास है और जिसमें सबका साथ और सबका विकास है। और उस विषय को लेकर के ही हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा भारत में महत्व है वो सहकारी संघवाद का महत्व है। और सहकारी संघवाद माने कि राज्यों को अपने अपने तरीके से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, लेकिन राज्य में जो गवर्नर की भूमिका है वो हमेशा गवर्नर की ऐसी भूमिका रहेगी कि वो राज्यों में किसी भी प्रकार से, हम राज्य में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से जो कार्य उत्तराखंड में हुआ, जो कार्य अरुणाचल में हुआ, कांग्रेस के आंतरिक विभाजन के कारण विषय था। और इसलिए वहां की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस राजनीतिक परिस्थिति में जो केंद्र सरकार है उसने निष्पक्षता से कार्य किया। और आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, चूंकि ये विषय गवर्नर के विषय का और राज्य के अधिकारों का विषय का चल रहा है और इस सदन में भी ये विषय चल रहा है, इसलिए विधानमंडलों में हमारे अनुच्छेद में जो स्पीकर को एक निष्पक्ष निर्णय लेने की बात है उस पर लगातार विषय चलता रहता है। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से वो आवाज आनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की असंबद्धता, ये जो नया जो परिवर्तन आया एंटी डिफेक्शन का कारण, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई विधायक स्पष्ट बात कहना जाए तो उससे पहले विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई कर दी जाए। ये मूल विषय जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और इसलिए सदन में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र में, संघवाद में और देश के शासन व्यवस्था की गरिमा में विश्वास करती है। हमारी पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी राज्य सरकार के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं किया गया है। और निश्चित रूप से जब तक देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, देश के सभी राज्यों में एक रचनात्मक तरीके से और एक निष्पक्ष तरीके से शासन व्यवस्था जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। Now, Dilip Chirki, are you speaking? But Raja is in a hurry. I will call Raja first and then call you. Sir, D. Raja. You are the king before the sun. D. Raja. Oh, why point of order? Let us conclude this. I am. लोकसभा की प्रक्रिया को या राज्यसभा की प्रक्रिया को लोकसभा में या किसी विधानसभा की प्रक्रिया को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, कंडेम किया जा सकता है। मैं इस पे आपकी रूलिंग चाहता हूँ। No, see, it is not the. Every house is supreme. No, every. The proceeding, See, and the decision taken in any house cannot be challenged. No, that's. Cannot be. I understood. Sit down. Every house is supreme. You should not criticize the proceedings of the house. But what is in the public domain has been reported as what happened in a house. Anybody can see that is in the public domain. See, only if it is a direct criticism. But this discussion, is a special discussion. This is a separate discussion where you are forced to discuss the role of the governor, and naturally, not the governor cannot discuss. Let me say, role of the governor, and the governor acted upon the action of the speaker. Indirectly it will also come. So naturally, sir, it is a short duration discussion, and generally short duration discussion 2 hour or 2.5 hour का होता है. अभी 5:15 बज गया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 बजे तक अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कंक्लूड होता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई और बिजनेस है नहीं. But my problem I will tell you, my problem I tell you, the 53 minutes. सर जो अभी डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा हुआ है, वेरी हेल्दी डिस्कशन हुआ है. स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला. अगर अच्छा होगा कि जो अभी रिमेनिंग स्पीकर्स हैं उनको आप जो है 2-2 3-3 मिनट में इसको कंक्लूड करें तो बेटर होगा. Okay. No, I agree with you, but the point is both main ruling party and opposition party has taken more time.
Therefore, others will also expect little Well, more it's time. all right. We'll That try is the it, point. sir, try it. You want taken more time, they also taken more time. So, see, and they will say, if I cannot control you, so now, Raja, D. Raja, I already said that, D. Raja, I gave the ruling. I am allowing you also. I said, Our government. So we are all affected party. yeah, I will allow you, don't worry. D. Raja. D. Raja. A very I know that. important issue. This issue Yeah, used that- to be that- discussed that you for need not tell hours, me. for days. D. Raja. And we want a serious discussion No, on no. this. Since Sit the down, sit discussion down. is progressive, That I know. let it Sri D. Raja. That I know, I agree. Sri D. Raja. Thank you, sir. You will take 5 minutes, you agree? Okay, Thank you, sir. okay. We are discussing a very serious political and constitutional matter. Call It this is not an issue Sundar. between BJP and Congress. It is an issue concerning our democracy, concerning our constitution. Sir, as a citizen, primarily, as a member of this House, I am extremely concerned that our democracy is at the crossroad.